శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. Dear devotees, we are welcoming all for today's live streaming from our Setutirtha Kshetram, Bridgewater Sri Venkateswara Temple, New Jersey. Today, Poornima, we are doing Sri Satyanarayana Swamy Puja. Please all of you keep watching and seek blessings from Sri Venkateswara Swamy, Sri Shankaranarayana Swamy, Sri Satyanarayana Swamy. Dhanyavadaha, sarve janaha sukhino bhavantu. पूर्वोक्ते मंगलविषेदनुष्ठायामस्यां सुभातिथौ यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य शाण्डिल्यगोत्रोद्भवस्य राजन कुमार सिंहानां याः पूर्णिमा सिंहानां याः सुलै सिंहानां याः मगा नक्षत्रे कृतिका भासिन्नां याः आर्द्रा नक्षत्रे ऋतांबर सिंहानां याः आश्लेषा नक्षत्रे शिवंगी सिंहानां याः पुनर्वसो नक्षत्रे दह कुटुंबानां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य शिवाजी नामधेयस्य सुवर्णानां याः रंजित नामधेयस्य जयदीप नामधेयस्य सेजल नाम याः कृष्णानां याः शिव नामधेयस्य दह कुटुंबानां विश्वामित्र गोत्रोद्भवस्य जानकी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे उषा गेटे नक्षत्रे सुधा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे शरद सरगन नक्षत्रे रवि स्वाति नक्षत्रे धारणी गेटे नक्षत्रे संजीवनिका मिश्राणां याः दह कुटुंबानां जन्मानस्य शुभगोत्रोद्भवस्य निरेन्नामधेयस्य धर्मपत्न्याः शकुन्तलानां याः यजमानस्य पुत्रस्य विवेकनामधेयस्य रः कुटुम्बानां श्रीवत्सरगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटसूर्य सत्यनारायण प्रसाद नामधेयस्य रत्ता नक्षत्रे कवितानां याः आर्यन सूर्यानां याः विशाखा नक्षत्रे ऐश्वर्यलक्ष्मीनां याः दः कुटुम्बानां यजमानस्य गर्गोत्रोद्भवस्य जितञ्जानीनां याः अल्पानां याः रियानां याः साहजनामधेयस्य रः कुटुम्बानां विष्णुगोत्रोद्भवस्य जीवरामस्वामिनामधेयस्य रेवती नक्षत्रे गिरिजा ज्योति आरुमुखं नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे हर्षिणी गिरिजीवानां याः मगन् नक्षत्रे रः कुटुम्बानां जन्मानस्य मार्कण्डे गोत्रोद्भवस्य बालाधीमघा नक्षत्रे चारुमतीनां याः चतुर्विशा नक्षत्रे दीप्तानां याः रेवते नक्षत्रे अनुश्रीणां याः कृतिका नक्षत्रे रः कुटुम्बानां शुभगोत्रोद्भवस्य समीर पटेल नाम याः नक्षत्रे ऊर्वशी पटेल नाम याः नक्षत्रे प्रार्थन पटेल नाम याः नक्षत्रे आर्द्राश पटेल नाम याः नक्षत्रे कोमल नाम याः निकिता नाम याः दः कुटुम्बानां जन्मानस्य वत्सगोत्रोद्भवस्य अनुत्सेर शुभनक्षत्रे सविता सेतनां याः नक्षत्रे अरण्या सेतनां याः नक्षत्रे कृष्णेतनामधेयस्य नक्षत्रे सह कुटुम्बानां जन्मानस्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य कपिलाबेन पटेल नाम याः सह कुटुम्बानां जन्मानस्य गोत्रोद्भवस्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य समित पटेल हंसा पटेल सविल पटेल अनिल पटेल नाम याः जानो पटेल नाम याः सह कुटुम्बानां जन्मानस्य गोत्रोद्भवस्य पैडिपाल गोत्रोद्भवस्य सोमशंकर वेंकट नागेश्वर नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे अपर्णानां याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे अभिराम प्रणो नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे दः कुटुम्बानां यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य त्रिशगोत्रोद्भवस्य श्रीधर नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे धनलक्ष्मीनां याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे मानसा श्रीवल्लीनां याः मगा नक्षत्रे विजयलक्ष्मीनां याः रत्ता नक्षत्रे सुशीलाल्नां याः भरणी नक्षत्रे दः कुटुम्बानां जन्मानस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य अनिलनामधेयस्य प्रमीलानां याः मित्रनामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मितालीनां याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे स्वादीनां याः मूला नक्षत्रे ऐराणां याः मूला नक्षत्रे अमयानां याः प्राचीनां याः वियान्नामधेयस्य रः कुटुम्बानां कश्यपगोत्रोद्भवस्य जगदीश शुभनक्षत्रे विरजानां याः नक्षत्रे मानसीनां याः नक्षत्रे नेहा नक्षत्रे किशोरीनां याः नक्षत्रे बालकृष्णन्नामधेयस्य नक्षत्रे रः कुटुम्बानां कश्यपगोत्रोद्भवस्य धर्मिष्ठाक्षयनामधेयस्य रीनानां याः श्रीवल्लीनां याः यास्नामधेयस्य सह कुटुम्बानां नैशल्यगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरमणकोगण्डनामधेयस्य पण्डवसो नक्षत्रे पद्मजानां याः उब्बा नक्षत्रे हरिवित्ता नक्षत्रे साहिते हस्ता नक्षत्रे दः कुटुम्बानां जन्मानस्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य कल्पेश पटेल विनीतानां याः उमाङ्गनामधेयस्य ऐशिकानां याः
सह कुटुम्बानां बालकृष्णगोत्रोद्भवस्य हरिनारायण अनुषण नक्षत्रे सुनीता विट्टन नक्षत्रे ईश्वर प्रसाद नामरेस्य पुनर्भूषण नक्षत्रे राह कुटुम्बानां चंद्रघंट गोत्रोद्भवस्य रुपय्य नामरेस्य सुशीला नाम्याः मेघनाथ नामरेस्याभिनव नामरेस्य पवन वेदांश नामरेस्य करुणाराणी नाम्याः दह कुटुम्बानां जन्मानस्य गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य संजीवकुमार भरणे नक्षत्रे बिंदो स्वादे नक्षत्रे जुभा पूजन नक्षत्रे हृतिका कृतिका नक्षत्रे अभिषेक रेवते नक्षत्रे विमल नामरेस्य विशाखा नक्षत्रे रह कुटुम्बानां यजमानस्य वसिष्ठ गोत्रोद्भवस्य अलीशानां याहार्द्रा नक्षत्रे सोनाली मगा नक्षत्रे श्रीकांत मृगशिरा नक्षत्रे सुरेश पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे कस्तूरी नाम याह मृगशिरा नक्षत्रे सुमानां याह सह कुटुम्बानां मिताल गोत्रोद्भवस्य मुकेश जैन नामरेस्य आशा कुयल जैन नाम याह दह कुटुम्बानां इनकुरुलगोत्रोद्भवस्य गंगाधर कृतिका नक्षत्रे नमितानां याह अनुराधा नक्षत्रे धाराणां याह पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे सह कुटुम्बानां शिवगोत्रोद्भवस्य सेंदिल नामरे सेंदिल राजगोपाल केट्टय नक्षत्रे आनंदे कृतिका नक्षत्रे ईशान ऐश्वनी नक्षत्रे सान कृतिका नक्षत्रे उत्तरट्टाद नक्षत्रे रह कुटुम्बानां कौजगरगोत्रोद्भवस्य राधेस्यामुत्तरा भाद्रा नक्षत्रे कविता पुष्यमे नक्षत्रे विवेक वेंकटेश्वर नामरेस्य पूर्वाजाढा नक्षत्रे सह कुटुम्बानां मनोवाञ्छा परसिद्ध्यर्थम् यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य
Please all of you do namaskaram. Om ayam muhurtah sumuhurto astu. Tadeva laknam sudanandareva tarabalam chandrabalandareva vidyabalam devabalandareva lakshmi varereng hriyago smarami yatra yogeswarah krishno yatra bardho dhanurdarah tatra sri vidaja bhutihi dhrivani dharmatarvama hriday sakala kalyana bhajanam yatra jajate purahastavajan nityam vradami saranam harim सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति देशाममङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः लाभस्तेषां निजस्तेषां गुरस्तेषां पराभवः येषामिन्देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धदादिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्तुते। ओम अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. Please all of you wash your hands. Hastam vrakshalya. Please all of you take the tirtham. Please repeat the nama. Om Achyutaya Namaha. Then drink it. Again take a spoon of water in your right hand. Please repeat the nama. Om Anantaya Namaha. Then drink it. Again take a spoon of water in your right hand. Please repeat the nama. Om Govindaya Namaha. Then drink it. Again wash your hands. Please do namaskaram. Please repeat the namas. Om Keshavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Madhusudhanaya Namaha. Om Trivikramaya Namaha. Om Vamanaya Namaha. Om Sridharaya Namaha. Om Rishikeshaya Namaha. Om Padmanabhaya Namaha. Om Damodaraya Namaha. Please all of you do prananayamya. Om Bhurtbhuvasvarom. Please take some akshatas. Please repeat the sankalpam. Sri Govinda, 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 Sri Mahavishnuho, Ajnaya, Pravartamanasya, Adya Brahmanaha, Dvitiya Pararthe, Sri Svetavaraha Kalpe, Vaivasvata, Manvantare, Kaliyuge, Prathamapade, Kraunchadvipe, Aindravarshe, Ramanaka Khande, Uttara Amerikayam, Asmin, Vartamana, Vyavaharika, Chandramanena, Prabhavadi, Sashti, Samvatsaranam, Madhye, Sri, Krodhinama, Samvatsare, Dakshinayane, Saradrutau, Ashmijamase, Suklapakshe, Adya, Poornamyam, Subhatidhau, Vasaraha, Saumyavasare, Subhavasare, Subhanakshatra, Subhayoga, Subhakarana, Evanguna, Viseshana, Visishtayam, Asyam, Subhatidhau, Asya Sri, Sri Padmavati, Goda Sameta, Sri Srinivasa, Swamin, Sannidhau, Sankalpita, Evam, Sri Rama Sahita, Veera Venkata, Satyanarayana, Swamin, Sannidhau, Sankalpita, Poornami, Prayukta,
श्री सत्यनारायण स्वामिनः व्रताख्ये कर्मणि अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं मनोवांच फल सिद्ध्यर्थं मनस्संकल्प सिद्ध्यर्थं मम गृहे स्थिरलक्ष्मी निवास सिद्ध्यर्थं अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्यर्थं संकल्पित श्रीरमा सहित वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिनः व्रताख्यं कर्म करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्यर्थं श्री महागणपति पूजांच करिष्ये. Please offer the akshadas to Lord Ganapati. Please take some akshatas. Please put some akshatas into the water cup. Please close the water cup with your right hand. Please repeat the slokam. Gange cha Yamune chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhin Kuru Sakala Tirtharajaya Namaha. Om Abova Idako Sarvam Vishna Bhutanyabha Pranava Abha Pashava Apon Namava Mrdamava Sandadavo Viranava Saranava Chanda Gustyabo Yoti Gustyabo Jarogustyabo Satyamava Sarva Devata Apo Dhurbhavasvarava Om Sakala Puja Dravyani Atmanancha Prokshayed. Please sprinkle some water in Puja Dravyas in your head, your family members. Om Yena Deva Pavitrena Atmanam Punate Sada Tena Sahasradharena Pavamanya Punandama Prajavatyam Bhavitram Satodyamago Hiranmayam Tena Brahma Vido Vayam Putam Brahma Punimahe Indra Suniti Sahama Punado Samasvastya Varana Samitsya Yamo Raja Pravrana Bhipunaduma Jataveda Morjayantya Punato. Please take one flower and some akshatas. Please repeat the slokam. Shuklam Baradharam Vishnum Sesivaranam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayete Sarva Vigna Upashantaye Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvighnan Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Sri Mahaganadhipataye Namaha. Avahayami. Please offer the akshatas to Lord Ganapati. Again take some akshatas. Please repeat. Om Sri Mahaganadhipataye Namaha. Asanardham Akshatan Samarpayami. Please offer the akshatas to Lord Ganapati. Please sprinkle some water on Lord Ganapati. Om Sri Mahaganadhipataye Namaha. Hastajoho Argham Samarpayami. Parajoho Padyam Samarpayami. Mukhe Achamaniyam Samarpayami. Aupacharika Snanam Samarpayami. Om Apohishtamayo Bhavastana Urjeta Dhatana Maherana Jarakshase Yavashivaramoradhastasya Bharayate Hanaha Kshatera Mamataraha Tasma Arangama Bhojas Sakshaya Janvadha Apo Janayadha Janaha
स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. Please take some akshatas. Please repeat. Om Sri Mahaganadhipataye Namaha. Vastrartham Akshatan Samarpayami. Please offer the akshatas to Lord Ganapati. Please take some kunkuma. Please repeat. Om Sri Mahaganadhipataye Namaha. Kunkumadi Parimala Dravyani Samarpayami. Please offer the Lord Ganapati. Again, take some akshatas. Please repeat. Om Sri Mahaganadhipataye Namaha. Yajnapavitam Samarpayami. Please offer the akshatas to Lord Ganapati. Om Yajnapavitam Paramam Pavitram Prajapareryat Sahanam Brastade Ayushyamagriyam Pradamanju Shapram Yajnapavitam Balamastu Tejaha. Please do Archana with akshatas. Please repeat the namas. Om Sumukhaya Namaha. Om Ekadantaya Namaha. Om Kapilaya Namaha. Om Gajakarnikaya Namaha. Om Ganadhyakshaya Namaha. Om Lambodharaya Namaha. Om Vikataya Namaha. Om Vighnarajaya Namaha. Om Dhumaketave Namaha. Om Palachandraya Namaha. Om Surpagarnaya Namaha. Om Herambaya Namaha. Om Skandapurvajaya Namaha. Om Varasiddhi Vinayakaya Namaha. Nanavida Parimala Patra Pushpani Samarpayami. Dhupamaghapayami me dhupa swadhupa divyadhupa virajudha Bhuta Brahma Pavitreena Bhuta Suryasya Rashmibhihi Dhupamagrapayami Sakshad Pratyakshadevam Sandarshayami. Jai Bolo Ganesh Maharaj Ki Jai. Dhuparīpānantaram Suddha Achamaniyam Samarpayami. Again, sprinkle some water. Dhuparīpānantaram Suddhāramaniyam Namarpayami. Please take one fruit. Please keep it in front of Lord Ganapati. Please sprinkle some water. Please do Naivedyam. Om Pranaya Swaha. Aparaya Swaha. Vyanaya Swaha. Udaraya Swaha. Samaraya Swaha. Brahmane Swaha. Again, sprinkle some water. Madhye Madhye Vani Namarpayami. Uttara Poshanam Namarpayami. Hasto Prakshalayami. Pado Prakshalayami. Mangala Nira Janadipam Sandarshayami. Please all of you do Namaskaram. Om Hiranyapatram Madho Purnam Dadhati Madhavyo Sarite Ekadha Brahmana Upaharati Ekadhaiva Yajamana Ayastejo Dadhati. Jai Bolo Ganesh Maharaj Ki Jai. Please all of you take some akshatas. Adha mantra pushpam om dhata purastadhyamudha jahara Shakra pravidvane pratisashadasraha tamevam vidvan amurteha bhavati nanyah pandha ajanaya vidyate om tatpurushaya vidmahe vakratundaya dhimahi tanno dandih prachodayate. Please repeat. Vedokta Suvarna Divya Mantra Pushpam Samarpayami. Please offer the akshatas to Lord Ganapati. Again, take some akshatas. Please repeat. Anaya Dhyana Avahanadi Shodasha Upacharan Sri
महागणाधिपतये नमः। सुप्रीताः सुप्रसन्नाः वरदा bhavantu. Please offer the akshatas to Lord Ganapati. Please take some akshatas in front of the Lord Ganapati. Put on your head, your family members. Om Ridhyasmahavyer Namasapasadya Mitran Devam Mitradhejannostu Anuradhan Havisha Vardhayantaha Sadanjivema Saradas Saviraha. Please all of you do namaskaram. Again repeat the sankalpam. पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम अस्याम सुभातिधौ यथा संकल्पित श्री रमा सहित वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामिन् व्रत मध्ये पंचलोकपालक आदित्यादि नवग्रह देवता इंद्राग्नि अष्टदिक्पालक आवाहनंच कारिष्ये. All of you take some akshatas. अधावों गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीना मुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्तेदसादनम्. Please repeat. Om Sri Mahaganadhipataye Namaha. Ganapatim Lokapalakam Avahayami Sthapayami Pujayami. Please offer the akshatas to Lord feet. Again take some akshatas. Om Brahma Devana Am Ravekvinam Sarvipranam Ishamragana Am Sienagurtha Nagaspadharvana Nagosam Pavitramatye Drebhanne. Please repeat. Om Brahmane Namaha. Brahmanam Lokapalakam Avahayami Sthapayami Pujayami. Please offer the akshatas to Lord feet. Again take some akshatas. Om idam vishnavijakrame tredhartare varam samodhavasya bhago sure. Please repeat. Om Vishnave Namaha. Vishnum Lokapalakam Avahayami Sthapayami Pujayami. Please offer the akshatas to Lord feet. Again take some akshatas. Om Kadrudraja Pradesase Medhoshtamaya Ravyase Voche Mashantamago Hrude. Please repeat. Om Rudraya Namaha. Rudram Lokapalakam Avahayami Sthapayami Pujayami. Please offer the akshatas to Lord feet. Again take some akshatas. Om Gauri Maya Salarda Kshadye Kapade Tumari Sadataspade Ashtapade Navade Bhovashi Sahasra Akshara Parame Vyomanne. Please repeat. Om Gauri Devyai Namaha. Gaurim Lokapalakim Avahayami Sthapayami Pujayami. Please offer the akshadas to Lord feet. Now the puja for Navagraha Devatas. Please repeat the slokam. Surya Arishtetu Samprapte Surya Pujancha Karayed Surya Dhyanam Pravakshyami Atma Pida Upashantaye. Om Akrishnerasa Vartamano Niveshayan Namratam Martyancha Hiranyajayana Savitara Dena Devo Yati Bhuvanaj Pashkanne. Om Ajnan Dotam Vranema Hehotaram Vishnaverasam Asya Yajnasya Shukratam. Om Kadrudraja Pradesase Medhoštama Jaravyase Voche Mashandamago Hrude. Please repeat. Om Sangam Sayudham Savahanam Sashakti Patni Putra Adidevata Pratyadevata Sahita Surya Graham Avahayami Sthapayami Pujayami.
Please offer the akshadas to Lord feet. Again take some akshadas. Please repeat the slokam. Chandra arishtetu samprapte chandra pujancha कारयेद चंद्रध्यानम प्रवक्ष्यामि मनः पीड उपशान्तये ओम आप्यायस्व समेतुते विश्वरस्वामवृष्णियं भवावारस्य रंगधे अप्सुमे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वान् भेषज अज्ञञ्च विश्वदं भवम् आपश्च विश्वभेषणीः ओम गौरीमाय सरलार्धक्षद्येकपदे तपदीशाचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बहुषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन् प्लीज रिपीट ओम सांगम सायुधम सवाहनम सशक्ति पत्नी पुत्र अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित चंद्रग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Please offer the akshadas to Lord feet. Again take some akshadas. Please repeat the slokam. Kuja arishtetu samprapte kuja pujancha कारयेद कुजध्यानं प्रवक्ष्यामि रोगपीड उपशान्तये ओम अज्ञर्मूर्धा दिवः कवित्पति पृथिव्या अयम् अपागो रेतागो स्यन्वते स्यो न प्रोथेवि भवानक्षरानिवेशने यच्छानशर्मदप्रधा आह क्षेत्रस्य पदना वजगो हतेने विरजामसि गामश्वं वारिहित्वा सनामृडाति दृशे. प्लीज रिपीट ओम सांगम सायुधम सवाहनम सशक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतं कुजग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Please offer the akshadas to Lord feet. Again take some akshadas. Please repeat the slokam. Buddha arishtedu samprapte buddha pujancha कारयेत बुधध्यानं प्रवक्ष्यामि बुद्धिपीड उपशान्तये ओम उद्बुद्ध्यस्वाज्ञे प्रतिजार्ह्यर्मिष्टाभूर्ते सगोसते रामयञ्च पुनः कृण्वग्स्त्वा बदरङ्गवान् वन्वारागो सीत्वजेदन्तमेदम् इदं विश्वचक्रमे त्रेधार्दने परं समूढमस्य भागो सुरे सहस्रदेरुषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलम्. प्लीज रिपीट ओम सांगम सायुधम सवाहनम सशक्ति पत्नी पुत्र अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित बुधग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Please offer the akshadas to Lord feet. Again take some akshadas. Please repeat the slokam. Guru arishtetu samprapte guru pujancha कारयेद गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि पुत्रपीड उपशान्तये ओम बृहस्पते अतियतरः आद्यमध्यभारिकृतमज्जनेषु यद्देद गच्छवसृतप्रदातरस्मासुद्रविणं देहि दित्रं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादधीमरस्सुरदोवेन आवह सबुद्धिजा उपमा अस्य विष्टाः सदाश्च योनिम सदाश्च विवाह. प्लीज रिपीट ओम सांगम सायुधम सवाहनम सशक्ति पत्नी पुत्र अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित बृहस्पति ग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Please offer the akshadas to Lord feet. Again take some akshadas. Please repeat the slokam. शुक्र अरिष्टेदो संप्राप्ते शुक्र पूजांच कारयेद शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि कलत्रपीड उपशान्तये ओम शुक्रन्ते अन्यद्य रदन्ते अन्यद्विषरभ्यः नेद्योरिवासी
विश्वाह्यमाजा अवरिस्रावो भद्रादे भूषण्यरादरस्तो इंद्राणी मासुनारदुपत्नीं हमस्रवम् नह्यस्या आपाराञ्चन जरसामरते पतिः इन्द्रमर्तैः वाहि सामङ्गथाशार्याते अपि वत्सरस्य तव प्रणेदेरवशोरधर्मण्णाय वासन्ते कवयस्व यज्ञाः. प्लीज रिपीट. ओम सांगम सायुधम सवाहनम सशक्ति पत्नी पुत्र अधिदेवता प्रत्यधिदेवता साहित शुक्र ग्रहम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Please offer the akshadas to Lord feet. Again take some akshadas. Please repeat the slokam. शनि अरिष्टेतु संप्राप्ते शनि पूजांच कारयेद शनि ध्यानं प्रवक्ष्यामि प्राणपीड उपशान्तये. ओम शमज्ञरज्ञविस्करच्छन्नस्तमदूर्यः शंवादो वात्मरप अपसृधः. ओम यमाय सोमगो श्रुत यमाय जुहुदा हविः यमगोह यज्ञागच्छत्यग्निदूतो अलङ्कृतः. प्लीज रिपीट. ओम सांगम सायुधम सवाहनम सशक्ति पत्नी पुत्र अधिदेवता प्रत्यधिदेवता साहित सनैश्चर ग्रहम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Please offer the akshadas to Lord feet. Again take some akshadas. Please repeat the slokam. राहु अरिष्टेदु संप्राप्ते राहु पूजांच कारयेद राहु ध्यानं प्रवक्ष्यामि चक्षुः पीड उपशान्तये. ओम कयानश्चित्र आभवदूते सदा वृदस्सखा कया सदिष्टया वृता आयंग पृष्टिरक्रमे धृणन् मातरं पुनः पितरञ्ज प्रयन्सुवः नमोऽस्तु तर्पेभ्यो जयगैर्पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षीयर्विरेभ्यः सर्पेभ्यो नमः. प्लीज रिपीट. ओम सांगम सायुधम सवाहनम सशक्ति पत्नी पुत्र अधिदेवता प्रत्यधिदेवता साहित राहुग्रहम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Please offer the akshadas to Lord feet. Again take some akshadas. Please repeat the slokam. केतु अरिष्टेतु संप्राप्ते केतु पूजांच कारयेद केतु ध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञानपीड उपशान्तये. ओम केतुं गृह्णन्न गैरवेपेशो वर्या अपेशसे सामोषाद्भिरजायताः ब्रह्मज्ञानं प्राथमं पुरस्तात् श्रीमदस्सुरजो वीर आवः समुद्ध्यजापमास्य विष्टाः सदाष्टयोनि मसदाष्टविवाह. प्लीज रिपीट. ओम सांगम सायुधम सवाहनम सशक्ति पत्नी पुत्र अधिदेवता प्रत्यधिदेवता साहित केतुग्रहम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Please offer the akshadas to Lord feet. Please all of you do namaskaram. Please repeat the slokam. Adityaya cha somaya mangalaya budhaya cha guru shukra shenibhyascha rahave ketave namo namaha. आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः. ततः इंद्राग्नि अष्टदिक्पालक आवाहनं च कारिष्ये. ओम इंद्रं वा विश्वरस्त्रिः वा महेजनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः. Please all of you take some akshatas. Please repeat. ओम इंद्राय सुराधिपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Please offer the akshadas to Lord feet. Again take some akshadas. Om
अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेरसम् अस्य यज्ञस्य शुक्रदम् प्लीज रिपीट ओम अग्नये तेजोधिपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Please offer the akshatas to Lord feet. Again take some akshatas. Om Yamaya Samago Surdayamaya Hudahavihi Yamago Hajaknagat Satyagdoto Arankritaha. Please repeat. Om Yamaya Dharmadhipataye Namaha Avahayami Sthapayami Pujayami. Please offer the akshadas to Lord feet. Again take some akshadas. Please repeat. Om Nirirtaye Rakshodhipataye Namaha Avahayami Sthapayami Pujayami. Please offer the akshadas to Lord feet. Again take some akshadas. Om Datvajaya Brahmana Vandaman Hastarada Aste Yajamano Havirbhihi Ahedamano Varuneha Podurjago Samana Aja Pramoshihi. Please repeat. Om Varunaya Jaladhipataye Namaha Avahayami Sthapayami Pujayami. Please offer the akshadas to Lord feet. Again take some akshatas. Om Tamavaya Prasasvade Raktaro Jama Dharitbhuta Avam Syavronimhe. Please repeat. Om Vayave Pranadhipataye Namaha Avahayami Sthapayami Pujayami. Please offer the akshadas to Lord feet. Again take some akshatas. Please repeat. Om Kuberaya Dhanadhipataye Namaha Avahayami Sthapayami Pujayami. Please offer the akshatas to Lord feet. Again take some akshatas. Om Moshana Para Abanardar Drehana Abadhid. Om Tamisha Anandagaras Dhiyanjinvase Homahe Vajam Pusha Nojadha Veda Samasat Praderakshida Pajuradabdhas Vastaye. Please repeat. Om Ishanaya Pashupataye Namaha Avahayami Sthapayami Pujayami. Please offer the akshadas to Lord feet. Please all of you do namaskaram. Now the puja for Kalasham. We are doing Kalasha Puja. Om Prananayamya पूर्वोक्त एवं भेदनिष्ठायामस्यां सुभातिधौ यथा संकल्पिता श्रीरमा सहिता वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिनः व्रतमध्ये कलशाराधनं च कारिष्ये. ओम येन देवाः पवित्रेण जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु. ओम इमं वस्त्राणि विवसावसाधैवोर्च्छिद्रामन्तमोहदर्गाः अवा आदरतमरोदान् विश्वा आरतेन मित्रा वरुणा सचेधे. ओम ओषधय संवदन्ते सोमेन दहराज्ञा यस्मै करोरि ब्राह्मणस्तगौराजन्वारयामसि. ओम आकलसे सुधारमित्रे परिशिच्यते उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते. ओम शन्नो देवीर्विष्टाय आपो भवन्तु वेदये संयोरभिस्रावन्तु नः आपो वा इत्यभिमन्त्र्या. ओम आपो वा इदगोधर्वं विष्टा भूतान्यापः प्राणाव आप पशव आपो नमापो वर्धमापो सुंडाडापो विराडापो स्वराडापो स्कंदागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो जरोगुष्यापो सत्यमाप सर्वा देवता आपो भूर्भुवः स्वराप. ओम ओम तत्त्वाजाय ब्रह्मणा वन्दमानस्तराडास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह पोद्युरुषगो समान आयु प्रमोषीः. ओम वरुणाय जलाधिपतये नमः आवाहयामि आसनं समर्पयामि. ततः प्रतिमायां पंचामृत अभिषेकाख्यं कर्म कारिष्ये.
Now the Panchamrita Abhishekam to Lord Satyanarayana Swamy. जय बोल सत्यनारायण भगवान की। ओम तत्संयोरावृणीमहे घातं यज्ञाय घातं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहस्रदेरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यरिष्टदशाङ्गुलं पुरुषजे वेरगो सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदेत् पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामते शासनानशने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमधो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्मयित्मः शरद्धविः सप्तास्यादन्वर्धजः त्रिसप्तदमिदः कृताः देवायत्यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं वशं तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाय दन्त साध्यार्षयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं वृषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्याने आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रजस्सामानजज्ञिरे छन्दागोऽसुजज्ञिरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्व अजायन्त एकेचोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरोदस्य यत्वैश्यः पद्भ्यागो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्याम्बो मृद्दिशः श्रोत्राद् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन यदास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रादेशश्च दस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयदन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनागं महिमानः सदन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूत पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आदपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनीषाणा अमुं मनीषाणा सर्वं मनीषाणा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्. Please all of you take one flower and some akshatas. Please repeat the slokam. Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishwakaram Gagana Sadrusham Meghavarnam Shubhangam Lakshmikantam Kamalanayanam Yogi Hridyanagamyam Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarva Lokaikanadham. Om Sri Rama Sahita Veera Venkata Satyanarayana Swamine Namaha Avahayami. Please offer the akshatas to Lord Satyanarayana Swami. Again take some akshatas. Please repeat. Om Sri Rama Sahita Veera Venkata Satyanarayana Swamine Namaha Asanartham Akshatane Samarpayami. Please offer the akshatas to Lord Satyanarayana Swami. Again, sprinkle some water and 6 times to Lord Satyanarayana Swami. Om Sri Satyanarayana Swamine Namaha. Hastajoho Argyam Samarpayami. Parajoho Padyam Samarpayami. Mukhe Achamaniyam Samarpayami. Aupacharika Snanam Samarpayami. Om Vrithyasmahavyer Namasopasadya. Mitran Devam Mitradhejanno Astu. Anuradhanaha Visha Vardhayantaha Satanje Vema Saradasaviraha. Please take some akshatas. Please repeat. Om Sri Rama Sahita Veera Venkata Satyanarayana Swamine Namaha Vastrartham Akshatane Samarpayami. Please offer the akshatas to Lord Satyanarayana Swami. Please take some kunkuma. Please repeat. Om Sri Rama Sahita Veera Venkata Satyanarayana Swamine Namaha Kunkumadi Parimala Dravyani Samarpayami. Om Narayanaja Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Again take some akshatas. Please repeat. Om Sri Rama Sahita Veera Venkata Satyanarayana Swamine Namaha Yajñopavitam Samarpayami. Please offer the akshatas to Lord Satyanarayana Swami. Please do archana with akshatas and flowers. Om. Please all of you repeat the Om Satyadevaya Namaha. Om Satyadevaya Namaha. Om Satyadevaya Namaha.
ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम नृपेन्द्राय नमः ओम हरजे नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम नराय नमः ओम सौरजे नमः ओम चक्रपाणये नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम जगद्योनये नमः ओम वामनाय नमः ओम ज्ञानपञ्जराय नमः ओम श्रीवल्लभाय नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम चतुर्मूर्तये नमः ओम चतुराननाय नमः ओम चतुर्व्यूहाय नमः ओम गरुडध्वजाय नमः ओम शंकराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम गरुडध्वजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम स्वयंभवे नमः ओम भवनेश्वराय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम देवकी पुत्राय नमः ओम पार्थदारदे नमः ओम अच्युताय नमः ओम सिंहबाणये नमः ओम परञ्ज्योतिरे नमः ओम आत्मज्योतिरे नमः ओम अचञ्चलाय नमः ओम श्रीवत्साङ्गाय नमः ओम नकिलाधाराय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम सर्वलोकप्रतिप्रभवे नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम त्रिकालज्ञाय नमः ओम त्रिधाम्ने नमः ओम सर्वेशाय नमः ओम करुणाकराय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम सर्वेश्वर्यै नमः ओम सर्वेशाय नमः ओम सर्वदाक्षिकाय नमः ओम हरये नमः ओम शार्ङ्गणे नमः ओम हरये नमः ओम शेषाय नमः ओम हलायुधाय नमः ओम सहस्रबाहवे नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम अक्षराय नमः ओम क्षराय नमः ओम गजारिघ्नाय नमः ओम कैशवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम कैशवर्धनाय नमः ओम कैटभारये नमः ओम नविद्यारये नमः ओम कामदाय नमः ओम कमलेक्षणाय नमः ओम अधर्मशत्रवे नमः ओम हंसशत्रवे नमः ओम गाकुत्स्थाय नमः ओम खगवाहनाय नमः ओम नित्याम्बुदद्युतये नमः ओम नित्याय नमः ओम नित्यतृप्ताय नमः ओम नित्यानन्दाय नमः ओम सुराध्यक्षाय नमः ओम ब्रह्मण्याय नमः ओम निरञ्जनाय नमः ओम निर्विकल्पाय नमः ओम सुराध्यक्षाय नमः ओम पृथिवीनाथाय नमः ओम वीरवादुदे नमः ओम गुहाश्रयाय नमः ओम वीरगर्भाय नमः ओम नभवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम श्रीविष्णवे नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम श्रीमते नमः ओम लोकत्रयाशयाय नमः ओम यज्ञमूर्तये नमः ओम नमेयात्मने नमः ओम वरदाय नमः ओम वासवानुजाय नमः ओम जितेन्द्रियाय नमः ओम जितक्रोधाय नमः ओम जितामित्राय नमः ओम सर्वलोकानामन्तकाय नमः ओम जगत्पूज्याय नमः ओम परमात्मने नमः ओम असुरान्तकाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम अनन्तविक्रमाय नमः ओम मायाधाराय नमः ओम निराधाराय नमः ओम सर्वाधाराय नमः ओम धराधराय नमः ओम धराधराय नमः ओम निष्कलङ्काय नमः ओम निष्प्रपञ्चाय नमः ओम निरामयाय नमः ओम भक्तवश्याय नमः जगत्पूज्याय नमः ओम महोदराय नमः ओम पुण्यकीर्तये नमः ओम पुरारातये नमः ओम पुण्यकीर्तये नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम श्री सत्यदेवाय नमः. Please all of you do Lakshmi Archana with Kunkuma. Om Prakrutye Namaha Vam Vikrutye Namaha Vam Vidyaye Namaha Vam सर्वभूतहितप्रदाये नमः ओम श्रद्धाये नमः ओम निभूत्ये नमः ओम सुरभ्ये नमः ओम परमात्मिकाये नमः ओम वासे नमः ओम पद्मालयाये नमः ओम पद्माये नमः ओम श्रुते नमः ओम स्वाहाये नमः ओम स्वधाये नमः ओम सुधाये नमः ओम धन्याये नमः ओम हिरण्मये नमः ओम लक्ष्मी नमः नित्यपुष्टाये नमः ओम निभावर्ये नमः ओम अमृत्ये नमः ओम दित्ये नमः ओम दीप्ताये नमः वसुधाये नमः ओम वसुधाय नमः ओम सप्रदाय नमः ओम वासवानुजाय नमः ओम प्रकृत्ये नमः ओम विकृत्ये नमः ओम विद्याय नमः ओम सर्वभूतहितप्रदाय नमः ओम श्रद्धाय नमः ओम निभूत्ये नमः सुरभ्ये नमः ओम परमात्मिकाय नमः ओम वासे नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम पद्माय नमः ओम श्रिये नमः ओम स्वाहाय नमः ओम सुधाय नमः ओम सुधाय नमः ओम धन्याय नमः
हिरण्मये नमः ओं लक्ष्मी नमः ओं नित्यपुष्टाय नमः विभावर्ये नमः ओं मरुत्ये नमः ओं दित्ये नमः ओं दीप्ताय नमः ओं वसुदाय नमः ओं वसुदारण्ये नमः ओं कमलाय नमः ओं कान्ताय नमः ओं क्षमाय नमः क्षीरोदम्भवाय नमः ओं अनुग्रहपराय नमः ओं वृद्धये नमः अनघाय नमः ओं हरिवल्लभाय नमः ओं शोकाय नमः ओं नमृताय नमः दीप्ताय नमः ओं लोकशोकविनाशिन्ये नमः ओं धर्मनिलयाय नमः करुणाय नमः ओं लोकमात्रे नमः ओं पद्मप्रियाय नमः ओं पद्महस्ताय नमः पद्माक्षे नमः ओं पद्मसुन्दर्ये नमः ओं पद्मोद्भवाय नमः ओं पद्ममुख्ये नमः ओं पद्मनाभप्रियाय नमः रमाय नमः ओं पद्ममालाधराय नमः ओं देव्ये नमः ओं पद्मिन्ये नमः पद्मगन्धिन्ये नमः ओं पुण्यगन्धाय नमः ओं प्रसन्नाय नमः ओं प्रसादामुख्ये नमः ओं प्रभाय नमः ओं चन्द्रवदनाय नमः ओं चन्द्राय नमः ओं चन्द्रदहोदर्ये नमः ओं चतुर्भुजाय नमः ओं चन्द्ररूपाय नमः ओं इन्दिराय नमः ओं इन्दुशीतलाय नमः वाक्लाजरङ्गे नमः ओं दृष्टये नमः ओं शिवाय नमः ओं शिवकर्ये नमः ओं सत्ये नमः ओं यमलाय नमः ओं विश्वजरण्ये नमः ओं दृष्टये नमः ओं दार्दनासन्ये नमः ओं रीरपुष्करण्ये नमः ओं शान्ताय नमः ओं शुक्लमाल्याम्बराय नमः ओं श्रिये नमः ओं भास्कर्ये नमः ओं बिल्वलयाय नमः ओं वरारोहाय नमः ओं निहसन्ये नमः ओं वसुन्धराय नमः ओं उदाराङ्गाय नमः ओं हरण्ये नमः ओं हेमारण्ये नमः ओं दरधान्यकर्ये नमः ओं सिद्धये नमः ओं श्रीणदोम्याय नमः ओं शुभप्रदाय नमः ओं नृपवेस्पगदानन्दाय नमः ओं वरलक्ष्मी नमः ओं वसुप्रदाय नमः ओं शुभाय नमः ओं हिरण्यप्राकाराय नमः समुद्रधनजाय नमः ओं जयाय नमः ओं मङ्गलदेव्ये नमः ओं विष्णुवक्षस्थलस्थिराय नमः ओं विष्णुपत्न्ये नमः ओं प्रसन्नाक्षे नमः ओं नारायणतमाश्रिताय नमः ओं दारिद्र्यध्वंसिन्ये नमः ओं देव्ये नमः ओं सर्वभद्रवारण्ये नमः नवदुर्गाय नमः ओं महाकाल्ये नमः ओं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाय नमः ओं त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः ओं भुवनेश्वर्ये नमः ओं श्रीमहालक्ष्मी नमो नमः ओं श्रीरमासहित वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामी परब्रह्मणे नमः ओं नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि उद्दीप्य सदावेदा भक्ष्यन्निरडतिं अशोकश्चमश्चमावह जीवनं च दिशो दिशा। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। Again sprinkle some water. Please open the prasadam box. Keep it in front of Lord Satyanarayana Swami. Coconut, fruits also. Please sprinkle some water. Om Prokshya Parashitya. Please do Naivedyam. Om Pranaja Swaha. Om Aparaya Swaha. Om Jnanaya Swaha. Om Udanaya Swaha. Om Samanaya Swaha. Om Brahmane Swaha. Again sprinkle some water. Madhye madhye vanayan namarpayami. Uttara bhushanan namarpayami. Hasto vrakshalayami. Pado vrakshalayami. Mangala nirajana deepam sandarashayami. Visala Sudu Namaskaram. Priyakanda Jagayanan Bhajen Bhajerthinam. Sri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam. Lakshmi Savitramaloka Sutro Viprama Chakshushe. Chakshushe Sarvalokanam Venkateshaya Mangalam.
मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः तत्कृतायास्तु मङ्गलम्। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। Please all of you take some akshatas. Please stand up. अधा मंत्र पुष्पम ओम धाता पुरस्ताद्युमुदाजहारा शक्र प्रविद्वान् प्रतिशश्चरस्रहातमेवं विद्वान् अमृतेः भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते ओम सहस्रदेरुषं देवं विश्वाक्षं विश्वदम्भवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभं विश्वरः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगो हरिं विश्वमेवेरं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पदिं विश्वस्यात्मेश्वरगो शाश्वतगो शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरं ब्रह्मरत्मन्नारायणपरः नारायणपरो ध्याताध्यानं नारायणपरः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते विव अन्तर्बहिश्चरत् सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्यजं कविको समुद्रेन्दं विश्वदम्भवं पद्मकोशप्रदेकाजगो हृदयं चाप्यधामकम् अधो निष्ट्याविरस्यान्तुनाभ्यामुपारितिष्ठते ज्वालमालाकुलं भारे विश्वस्यायतनं महते सन्दरगोधिराभिस्तम्भत्यागोर्धन्निभं तस्यान्तेर्धरगो सूक्ष्मन्दस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महारत्यरविश्वाच्चर विश्वरामुखः सोऽग्रभुक्तिपरं तिष्ठन्नाहारमजरः कविः त्रियगोर्ध्वमरस्याजैरश्मजस्तस्य नन्ददा सन्दावैरस्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वन्यदिघा अनीयो ऊर्ध्वा व्यवस्थितः नीलदोजन मध्यस्तात् विद्युल्लेखे बभास्वर नीवार सुगवत्तन्वे पीताभास्यात्तनोपमा तस्या आशिघाया मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा दिवसहरिसेन्द्र सोऽक्षर परमस्वराड राजाधिराजाय प्रदक्ष्य दाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेकाभानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरा वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओं तद्ब्रह्मा ओं तद्वायुः ओं तदात्मा ओं तत्सत्यम् ओं तत्सर्वम् ओं तत्पुरो नमः अन्धशरदभूतेषु गुहायां विष्णुमूर्तिषु त्वं यज्ञः संहृत्कारस्मिन्द्रत्वगो रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः वन्दनाभ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। वेदोक्ता सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पम समर्पयामि। Please offer the akshatas to Lord Satyanarayana Swamy. Please all of you do आत्म प्रदक्षिणा यानि कारद पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सलानदाशनं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो जनार्दन। साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। Please all of you sit down. Now the time for Sri Satyanarayana Vrata story. Please all of you take some akshatas. Please do namaskaram. Shantakaram bhujagasayanam patmanabham duresham vishwakaram gaganasadrusham meghavarnam shubhangam lakshmikandam kamalanayanam yogi hridyanagamyam वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। Chapter number 1. Saunaka and 88,000 other rishis assembled the forest of Naimisharanya and asked Maharshi Sutta, the narrator of the Purana, O Maharshi, please tell us how men can attain salvation. Maharshi Sutta answered, even Narada Muni had asked Lord Vishnu the consort of Lakshmi the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth. There he saw
people suffering as a result of their past deeds, to remove their suffering and offer salvation. Narada traveled to Vishnuloka and found Lord Vishnu adorned with a conch, chakra, gada, and a lotus in four hands, and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrendered the feet. Lord Vishnu greeted him and asked, Tell me what you want, and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow the grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, Man can attain salvation it off all its arrows by performing a puja called Sri Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life, and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just maintained. How and when to perform it and who has performed it before? Lord Vishnu answered, This puja can be performed on a full moon day, Ekadasi day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute the prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes, particularly in the Kali Yuga. This puja can bring contentment. Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan ki. Please offer the akshatas to Lord feet. Again, take some akshatas. Chapter number 2. Maharshi Sutta continued, addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who have all observed the Sri Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kashi, plagued by acute hunger. He used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin, and asked, Friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, Sir, I am a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I begged for alms. Sir, if you know a way out of his misery, please tell me. Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana granted the wishes of all his devotees and removes the sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Sri Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed only one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he bought fruits, milk, curd, and honey and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he should in property and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha. Maharshi Sutta continued. One day, when this Brahmin Kashi was observing Sri Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke. This is called Sri Satyanarayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself has been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved to the he would observe the vrata with whatever he was going to hereby selling firewood that day. He went to the part of the city where rich people lived, so the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought banana, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour, and performed the puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he took acquired enough wealth
lived comfortably, and finally attained moksha. Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan ki Jai. Please offer the akshatas to Lord feet. Again, take some akshatas. Chapter number 3. Maharshi Sutta continued. How best of Aztecs? I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a very wise king by the name Ulka Mukha. He had mustered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offered gift to the Brahmins. His lotus faced wife was a poor and pious woman. One day, the royal couple was performing Sri Satyanarayana Puja at the banks of the river Bhadrashila. At the time, a merchant called Sadhu side by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children, in order that I may be blessed with the children. I am worshipping the Lord Almighty Sri Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly, O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata, as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Sri Satyanarayana Puja with will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati soon and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Lilavati reminded her husband of his promise to perform Sri Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would to the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out of messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good natured and a handsome boy in a Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Sri Satyanarayana Puja and the Lord placed a curse on Sadhu. Then one day Sadhu went out of business trip with his son-in-law. He stopped to trade in Ratnapur with was ruled by King Chandraketu. During that time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu in Sanilla and escaped. Finding the things of king's treasury near Sadhu in Sanilla, the king's soldiers that thought that they were the thieves arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison because of Lord's Maya. Nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Lilavati lost everything. One day, Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Puja was beginning performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Lilavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Sri Satyanarayana Katha in somebody's house. Lilavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Sri Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends, prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayer. He appeared before King Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so,
Lord Satyanarayana wanted that his kingdom, wealth, and children world all disappeared. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu in Sanila to be released. And both before him, the late were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and sighed. You two have suffered gently because of your fate. But now there is nothing to fear. The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan ki. Please offer the akshatas to Lord feet. Again, take some akshatas. Chapter number 4. Sadhu in Sanila loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took them form of an old ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him and what he was carrying in his boat, without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise. Sadhu laughed mockingly and sighed, You Brahmin, you are thinking of stealing my things. We do not have any valuable in the boat except leaves and creeper plants. Whereupon Lord Satyanarayana replied, O Sadhu, so be it. The god then disappeared in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creeper plants, just as he had fastly to the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but was revived by his son-in-law, who spoke. This must be the curse of the ascetic. He must be my mistake. Let us go to him and ask for his forgiveness. The two merchandise went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and disappeared, begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord sighed, Sadhu, do not weep. You suffering because you have broken your promise time and again. On hearing this, Sadhu prayed to God, O Lord, even Brahma and other devatas drawn in your Maya cannot compute your various forms completely. How can I, with my limited ability, compute your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me. Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat, and it disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their where to inform them of their safe arrival. At the time, Lilavati and Kalavati were performing Sri Satyanarayana Puja. Lilavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of her angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do, thinking that he was Lord Satyanarayana's Maya. He announced to everybody that he was performing Sri Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased inside. Oh Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her has to see her husband. And so I made him and the boat disappeared. Let her go home and take the prasad and return. On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad, where she returned to the seashore. She found to her joy her husband and the boat. Then Sadhus returned home happily with his relatives, performed Sri Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world
and finally attained salvation. Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan ki Jai. Please offer the akshatas to Lord feet. Again take some akshatas. Chapter number 5. Maharshi Sutta continued. Once there was a king called Tungadhwaja who underwent a lot of misery because he refused the Sri Satyanarayana Prasad. One day, after hunting, he was resting under a tree. Cowherds were happily performing Sri Satyanarayana Puja nearby. The king, in vanity, refused the prasad they offered. When he reached his place, he found that his kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him the Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself, bestowed Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. The Lord showed in a blessing, and the king, resigning everything he had lost yearly, he lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharshi Sutta said, O holy man, I have narrated to you the Sri Satyanarayana Katha with words originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, man can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of the vrata can lead to gratification of one's wishes. Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan ki. Please offer the akshadas to Lord feet. Please all of you do namaskaram. Please repeat the slokam. Mantrahinam, kriyahinam, bhaktihinam, janardana, yatpujitam, maya deva, paripurnam, tadastute, kayena vacha, manasendriyairva, buddhyatmanava, prakrute swabhavat, karomi yadyat, sakalam parasmai, नारायणाय इति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. Please offer the akshatas to Lord Satyanarayana Swamy. Please all of you stand up. Now the Maha Harati. Om Jai Jagadish Hare Swami Jai Jagannath Hare भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे. ओम जय जगदीश हरे. जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का. स्वामी दुख बिन से मन का. सुख संगति घर आवे. सुख संगति घर आवे. कष्ट मिटे तन का. ओम जय जगदीश हरे. माता पिता तुम मेरे शरण गहुम किसकी. स्वामी शरण गहुम किसकी. तुम बिना और न दूजा. प्रभु बिना और न दूजा. आस करो मैं जिसकी. ओम जय जगदीश. तुम पूर्ण परमात्मा. तुम अंतर्यामी. स्वामी तुम अंतर्यामी. पहर ब्रह्म परमेश्वर. पहर ब्रह्म परमेश्वर. तुम सबके स्वामी. ओम जय जगदीश हरे. तुम करुणा के सागर. तुम पालन करता. स्वामी तुम पालन करता. मही मूरख घल कामी. मही सेवक तुम स्वामी. कृपा करो भरता. ओम जय जगदीश. तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति. स्वामी सबके प्राणपति. किसी विधि मिलो दयामय. किसी विधि
विलोन्दयामयतु मुखो मयि कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीनबंध दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठावो अपने प्रेम बढ़ावो वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकारो मिटावो पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो श्रद्धा प्रेम बढ़ावो संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्यनारायण जन नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम। ओम जय जगदीश हरे जय बोलिए सत्यनारायण भगवान की। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద సేతుతీర్థ నివాస శ్రీనివాస గోవింద। Dear devotees, we are concluding this evening live telecast right now. We will get back to you tomorrow evening 6 p.m. Sri Vishdahasranama Stotra Parayana. Please all of you keep watching and seek blessings from Sri Venkateswara Swamy, Sri Shankaranarayana Swamy, Sri Satyanarayana Swamy. Dhanyavadaha. Sarve janaha sukhino bhavantu.